Good morning, all of you. Today's topic, factor affecting price elasticity of demand. It is the last topic of this chapter. तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं, किससे वे प्रभावित होती हैं. ठीक है, तो अ चेंज इन प्राइस डज नॉट ऑलवेज लीड टू द सेम प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड. है ना, ये हमने देखा कि सभी कमोडिटीज़ पर प्राइस के चेंज होने का एक सा इफ़ेक्ट नहीं आता. है ना, किसी की प्राइस ज़्यादा बढ़ती है तो डिमांड कम अफेक्ट होती है. तो प्राइस और डिमांड के चेंज होने का रेशियो जो है वो अलग अलग है. ये हमने डिग्रीज़ में अच्छे से जाना. एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगी, अ स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ एसी में अफेक्ट इट्स डिमांड टू बी considerable extent, whereas a large change in price of salt may not affect its demand. है ना, ये हमने अच्छे से जाना कि नेसेसिटी वाली जो कमोडिटीज़ होंगी उनके प्राइस में भले कितना ही फ्लक्चुएशन हो, उनकी डिमांड में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है. बट एक्सपेंसिव जो थिंग्स होती हैं उनके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन हो, प्राइस के अंदर थोड़ा सा भी चेंजेस हो, तो आपका जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा जंप करता है ना. और जो कंफर्टेबल जो उनकी कमोडिटीज़ हैं उनमें वो इक्वल चलता है. अकॉर्डिंग टू प्राइस उनकी रिक्वायरमेंट्स बदलती है. मतलब जितना प्राइस में फ्लक्चुएशन होगा उतना ही आपकी डिमांड में भी फ्लक्चुएशन आएगा. ओके, तो हर एक का अलग अलग है. तो सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट गुड्स. सबका अलग अलग है ना. तो वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटीज़ आर, फर्स्ट इज अ नेचर ऑफ कमोडिटी, कि जो कमोडिटी है वो किस नेचर की है. हमने बताया आपको नेसेसिटी है, कंफर्टेबल है या लग्जरी है ना. तो वो जिस नेचर की होगी उसके प्राइस का उतना ही इफ़ेक्ट उसकी डिमांड पर आएगा, उतना ही उसकी क्वांटिटी डिमांड अफेक्ट होगी. जैसे समझ लीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स नेचर. A commodity for a person may be a necessity, a comfort, or a luxury. When a commodity is a necessity like food grains, vegetable, medicines, etc., its demand is generally inelastic, as it is required for human survival, and its demand does not fluctuate much with the change in price. We know very well, है ना. So when a commodity is a comfort like fan, refrigerator, etc., its demand is generally elastic, as consumer has postponed its consumption. उसे वो postpone कर भी सकता है ना. And luxury, when a commodity is a luxury like AC and DVD player, etc., its demand is generally more elastic as compared to demand for comforts. Okay, now सेकेंड फैक्टर है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स. उस कमोडिटी के सब्सटीट्यूट कितने मौजूद हैं. अगर उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है तो ऑब्वियसली उसका कितना ही प्राइस हो उसका डिमांड रहेगा. लेकिन अगर उसके सब्सटीट्यूट ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा प्राइस में चेंज होते ही उसकी डिमांड बदल जाएंगी. देखिए आप इसको, डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स विल बी मोर इलास्टिक. The reason is that even a small rise in its price will introduce the buyer to go for its substitutes. For example, a rise in the price of Pepsi encourages buyers to buy Coke and vice versa. Thus, availability of close substitutes make a demand sensitive to change in the price. On the other hand, commodities with few or no substitutes like wheat and salt have less price elasticity of demand. अब हम बात करेंगे थर्ड फैक्टर की, वो है आपका इनकम लेवल. ऑब्वियसली इनकम लेवल का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. अगर आपका इनकम कम हो जाता है तो आप डिमांड करना कम कर देते हैं, और अगर आपका इनकम बढ़ जाता है तो आप डिमांड करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं. और वैसा ही इन्फीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स के साथ भी होता है. इसका हमने पूरा बात किया है. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एनी कमोडिटी इज़ जनरली लेस फॉर हायर इनकम level groups in comparison to people with low incomes. Okay, it happens because rich people are not influenced much by changes in the price of goods, but poor people
poor people are highly affected by increase or decrease in the price of goods. As a result, demand for lower income group is highly elastic, and level of price also affect the price elasticity of demand. Costly goods like laptop, AC, etc. have highly elastic demand, as their demand is very sensitive to change in their prices. However, demand for inexpensive goods like needle, matchbox, etc. is inelastic, as change in price of such goods do not change their demand by a considerable amount. Okay. Now, postponement of consumption. Commodities like biscuit, soft drink, etc., whose demand is not urgent, have heavily elastic demand, as their consumption can be postponed in case of an increase in their prices. However, commodities with urgent demand like life-saving drugs have inelastic demand because of their immediate requirement. Okay. एंड नंबर ऑफ यूजेस, अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ उसको कर रहे हो तो उसका डिमांड बना रहेगा, लेकिन आप रेयर केस में उसको यूज़ कर रहे हो तो आप उसकी डिमांड बहुत कम करेंगे. लाइक देखिए, नेचर ऑफ यूजेस. इफ़ द कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन has several uses, then its demand will be elastic. When price of such commodity increases, then it is generally put to only more urgent uses, and as a result, its demand falls. When the prices fall, then it is used for satisfying even less urgent needs and demand rises. For example, elasticity is a multiple use commodity. Fall in its price will result in substantial increase in its demand, particularly in those uses like AC, heat converter, etc. है ना? तो where it was not employed formally due to its high price. And next factor is share in total expenditure. आपका total expenditure में उसका share कितना है ना? तो जैसे proportion of consumers' income that is spent on a particular commodity also influences the elasticity of demand for it. Greater the proportion of income spent on the commodity, more is the elasticity of demand for it and vice versa. Demand for a goods like salt, needles, soap, matchbox, etc. tends to be inelastic. A consumer spent a small proportion of their income on such goods. When prices of such goods change, consumers continue to purchase almost the same quantity of these goods. However, if the proportion of income spent on a commodity is large, then demand for such a commodity will be elastic. अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड की. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज related to a period of time. It can be a day, a week, a month, a year, or a period of several years. Elasticity of demand varies directly with the time period. Demand is generally inelastic in the short period. It happens because consumers find it difficult to change their habits in this short period in order to respond to a change in the price of the given commodity. However, demand is more elastic in long run, as it is comparatively easier to shift to other substitute if the price of the given commodity rises. देखिए हैबिट्स का भी बहुत फ़र्क पड़ता है ना. अगर आपकी आदत बन चुकी है तो आप कितना भी महंगा सस्ता हो आप नहीं देखोगे, आप उसको लोगे ही. लेकिन अगर आप उसको चेंज कर सकते हो तो यू कैन गो वेरी इजीली विद द प्राइसेस. ओके, देन हैबिट्स. अब इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे. अगर आपका हैबिट्स है तो कमोडिटी विच हैव बिकम habitual necessity for the consumer
have less elastic demand. Okay, समझ में आया? It happens because such a commodity becomes a necessity for a consumer and he continues to purchase it even if its price rises. Alcohol, tobacco, cigarette, etc. are the some examples of habit forming commodities. तो ये 9 factors हमने अभी एक्सप्लेन किए हैं आपको. ये 9 हैबिट फैक्टर्स हैं जो हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं. तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है. अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे. जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. ओके, आफ्टर दैट इट्स कंप्लीट. ओके.